It was 9 in the morning. The cafe was almost empty, sunlight slipping through the curtains, touching Aryan's face. He sat there, lost in thoughts, staring at the untouched cup of coffee that had gone cold. Sia walked in, slightly out of breath. तो बताओ आर्यन, क्यों बुलाए हैं मुझे इतना सुबह सुबह? Even my office starts at 11, you know. Today I had to interview बमन ईरानी और बस तुम्हारी वजह से मैंने छुट्टी ले ली. Aryan looked up, guilt flickering his face. Sia, तो मत आती ना फिर? He snapped, his voice louder than he intended. There was a silence. Sia blinked, surprised. Then softly said, Come on, Aryan. Itna gussa. And just like that, something broke inside him. I'm sorry, Aryan murmured, his tone trembling. I'm really, really sorry, Sia. You came just for me और मैंने तुमसे इतनी रूडली बात की. Sia sighed, trying to smile. It's okay. She sat down, her eyes searching his face. क्या हुआ है आर्यन? तुम मुझसे नाराज हो या खुद से? He exhaled deeply, looking away. पता नहीं. I've never spoken to you this way. It's been 6 years together, and today I was pathetic. Life हमेशा एक जैसी नहीं रहती, Sia said gently. कभी कभी अंदर की परेशानियाँ बाहर आ जानी चाहिए. मेरी भी गलती है. आते ही मैंने काम की बात छेड़ दी. तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम कैसे हो. Aryan smiled faintly, eyes glistening. I just wanted to meet you today. 7 महीने हो गए थे तुम्हें देखे बिना. सोचा संडे है मिल लेते हैं. पर अगर तुमने बताया होता कि तुम्हारा इंटरव्यू है तो हम किसी और दिन मिल लेते. तुमने ठीक किया, Sia said softly. मुझे भी देखना था तुम्हें. It's really been 7 months, my God. मैं काम में इतनी पागल हो गई हूँ कि तुमसे मिल ही नहीं पाती. न्यूज़ नाउ ने मुझे मेरा ड्रीम जॉब दिया है पर इसने मुझे तुमसे दूर कर दिया. Aryan's voice softened. I'm so happy for you, Siu. मैंने देखा है कि तुमने कितना स्ट्रगल किया है. Be grateful यार. इतने लोग सपना देखते हैं, तुमने जी लिया. But look at you, अपने ड्रीम जॉब से भी परेशान. Sia smiled weakly because it took my best friend away. And then Aryan said something she wasn't prepared for. पर मैं तो वैसे भी तुमसे दूर जा रहा हूँ. Sia laughed it off. ये तुम कम से कम 1000 बार बोल चुके हो, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है. Aryan looked at her, really looked at her this time. I'm leaving for UK next month. There was silence again. Sia froze. What? I got that deal, Sia, he said quietly. Her eyes widened. My God, Aryan, that's amazing. She smiled, genuinely happy for him. Uncle auntie must be so proud. But तुम खुश नहीं लग रहे. क्या बात है? Aryan looked down. His fingers trembled around the coffee cup. खुश कैसे हो सकता हूँ? He whispered. I've fallen out of love with you. The words hit her like a wave. He continued. इसलिए कहा था मैंने सिया, मैं तुमसे दूर जा भी रहा हूँ और तुम मुझसे दूर हो भी गई हो. तुमने ही तो कहा था, तुम्हारे जॉब ने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तुमसे दूर कर दिया. तुमने बॉयफ्रेंड नहीं कहा. And for the first time, Sia didn't know what to say, because somewhere deep down she knew he was right. They sat there in silence, the world outside moving as usual. Cars, people, life. But for Sia and Aryan, time had stopped. 2 cups of cold coffee, a conversation 7 months late, and a love story quietly ending on a Sunday morning.